हेलो हेलो हेलो। आज आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं बड़े ही ज़बरदस्त बंदे से। उसका नाम है अब्दुल्ला। है तो बंदा तो जो है मेरा भांजा है, लेकिन साथ दोस्त भी है मेरा बड़ा अच्छा ये। ठीक है, अब्दुल्ला साहब जो हैं वो जा चुके हैं एक बड़े डिफरेंट मुल्क में। उसका नाम है चाइना। इससे पहले कि मैं उसके पास जाऊं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज से 20 साल पहले यानी 2002 में या 2003 में जो चाइना था, उसकी नंबर ऑफ पब्लिकेशन जो थी वो पूरी दुनिया में सिर्फ 3% वो कंट्रीब्यूट कर रहा था अपनी रिसर्च के साथ। आज चाइना जो है वो 24% कंट्रीब्यूट कर रहा है और यूएस 21% कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि चाइना इज़ अ न्यू यूएस। लेकिन लोगों को पता ही नहीं। तो आए चलते हैं ज़रा अपने चाइनीज़ दोस्त के पास, अब्दुल्ला के पास, और उससे पूछते हैं कि वो आजकल क्या कर रहा है वहाँ पे। Assalamu alaikum, everyone. Hello, good morning, good evening, good afternoon, wherever you are in any part of the अब्दुल्ला world. भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या चल रहा है आजकल, कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, कैसे पहुँचे, कुछ थोड़ा सा अपने बारे में सबसे पहले बताएं। I'm currently located in this small city in China called Kunshan, in the Jiangsu province of China, which is around 20 minutes away by train from Shanghai, which is a very popular city among China and within China and among the people around the world. Um, I'm currently located in Duke Kunshan University, which is, before I explain that, it's a small campus within the center of Kunshan city. It's a beautiful campus, as you can see behind me. And the community around it is wonderful. You've got loads of parks, wonderful cafes, and really, really modern infrastructure, as I must say. यार मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये चाइनीज़ यूनिवर्सिटी है या यूएस की यूनिवर्सिटी है, या चाइना और यूएस ने मिल के एक यूनिवर्सिटी बना दी है। ज़रा थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये यूएस की यूनिवर्सिटी है। क्या कहते हैं आप? University. So basically, this university is like a collaboration kind of between the US and the Chinese government. Duke University एक बहुत famous university है अमेरिका में, जो कि पिछले 300 साल से education provide वगैरह कर रही है, and it has a legacy of excellent education across the world. They decided to collaborate with another amazing university in China called Wuhan University. And these are two of the best ranking universities in the world. And they decided to open this beautiful campus called Duke Kunshan University. Duke coming from the name Duke University, or Kunshan owing to the city in which this university is located in. तो इन्होंने सोचा कि हम लोग ये कैंपस खोलते हैं। ये कैंपस 2013 में खुला था और इसकी फर्स्ट क्लास 2022 में ग्रेजुएट की थी। इट्स अ स्मॉल कम्युनिटी, अप्रॉक्सीमेटली पर क्लास 400 से 500 लोग होते हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड इट मोर, मगर इट्स अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी एज टू से। थोड़ा सिली सा क्वेश्चन है, लेकिन मसला ये मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने ओ लेवल ए लेवल क्यों सिलेक्ट किया, इसकी क्या रीज़न थी? मुझे पता है तू बड़ा इरिटेट होता है सवाल से, लेकिन बट आई हैव टू आस्क। अंकल तुझे पता है ना फिर। Firstly speaking, like एक choice नहीं थी, it was mostly like a matter of convenience because I was studying in like a middle school जो कि directly connected था to the senior branch, और जो senior branch थी, like as in people who studied in that middle school LGS का, they directly went to the senior branch, और senior branch offer ही OA level करती थी, and because I mean most of my friends were taking it, तो मैंने कहा चलो मैं भी कर लेता हूँ। मगर if I were to go back in time and see if I would choose OA levels or not, I would still, and there are a few multitude reasons for that. I think like compared to other education systems in Pakistan, which is mostly like the metric and FSC system, and also the IB system, which is international block grade. IB system और OA level system में फ़र्क है काफ़ी हद तक. IB is more like I feel it's more sided towards how the American education system works, which is that आपकी class participation, आपकी presentations, आपका overall the way you perform in the class impacts your grade. OA levels का ज़्यादा ये होता है कि even though वो चीज़ें काउंट करती हैं, आपके फाइनल एग्जाम्स और आपके मिड टर्म एग्जाम्स ही आपका फाइनल ग्रेड डिटरमिन करते हैं। सो इस वजह से आई थिंक लाइक OA लेवल्स की जो एक यूनिक बात है वो ये है कि वो आपकी लर्निंग एक डीप क्वेश्चन ओरिएंटेड थॉट प्रोवोकिंग वे से इनिशिएट करता है, जिसमें आप कभी भी एक चीज़ को समझ इस तरह नहीं रहे होते कि ये बात है, ये सर्टन फैक्ट है, इसको रट्टा लगा लो या इसको मेमोराइज कर लो, एंड दैट्स द ओनली वे। द सेंटर ऑफ OA levels education is more about asking good questions, asking thought-provoking questions, or even asking the most simplest question. कि अच्छा अगर ये बात बताई जा रही है हमें, तो ये इसकी वजह क्या है? Why is this specific thing the way it is? And I think that primarily sets you up for life, because today in the modern world, you don't need people who have grades or who have degrees. You need people who know how to ask the right question. व्यूअर्स पता क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि उनको बताया जाए स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एडमिशन लिया जाता है। तो थोड़ा सा तू पीछे जा, स्टेप बाय स्टेप बता हमें कि क्या क्या करना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, स्पेशली चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर।
So in total, I got into around 12 to 13 universities in Canada, in the US, and one in China. Um, Canada के लिए it wasn't hard. It was mostly my grades which were taken into account, and that was mostly it. It was and कुछ universities के थे personal statements, कुछ की नहीं थी. In Canada, the universities that I got into were University of Calgary, University of Waterloo, and University of Toronto. मगर यूएस का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है. यूएस के जो एडमिशंस हैं उसको हम कहते हैं एक होलिस्टिक एडमिशन प्रोसेस. होलिस्टिक का मतलब ये है कि वो सिर्फ आपके ग्रेड्स नहीं देखते. दे लुक एट your activities, your essays, your personal statement, your teacher recommendations, and generally your like how you present yourself. So it's like a very like a holistic का मतलब like it's like a packed circle kind of thing जिसके अंदर multiple elements आपके देखे जा रहे होते हैं. तो इसके अंदर आपने मेक श्योर करना होता है कि आपकी ग्रेड्स टॉप नॉच होने चाहिए. दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आपकी एक्टिविटीज अच्छी हों, दैट विल बी अ ह्यूज एडवांटेज फॉर यू. बिकॉज इफ यू हैव लाइक लीडरशिप एक्टिविटीज, अगर आपने कम्युनिटी सर्विस अच्छी की, अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हो, आपकी स्कूल में बड़ी लाइक मे बी आप काउंसिल में हो, आप हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, लाइक दैट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्योंकि वो लीडरशिप शो करता है. एंड एवरी टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर दैट. उसके अलावा आते हैं आपकी टीचर रिकमेंडेशंस. टीचर रिकमेंडेशंस आर अ वे टू स्पीक टू द एडमिशन ऑफिसर्स डायरेक्टली, क्योंकि वो बताते हैं कि आप जो बच्चा है वो क्लास में ग्रेड के अलावा एग्जैक्टली क्या करता है. लाइक is the student asking thought-provoking questions? Is the student listening? Is the student empathetic towards their classmate? Is the student a good listener? So ये चीजें impact करती हैं because that's the kind of students that they want in their own classes. Major universities, they are students who listen, who allow other people to speak as well, who ask good questions or simply just ask questions. So ये एक important element होता है. And then you have like your personal statement, जिसमें and personal statement को जो सबसे आसान तरीका describe करने का which is that is your opportunity to speak to the admission officers directly. क्योंकि मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका में है, कनाडा में है, और आप मोस्टली इंटरव्यू नहीं दे सकते या मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफर भी नहीं करती. ये essay आपका इंटरव्यू है. And I cannot say this more clearly. This essay is literally like your interview because you're speaking directly to the admission officer that this is me, this is how I think, this is what I think of the world, these are the struggles that I've gone through, this is how I've overcome it. ये मेरी growth है. And that is a huge and a very important aspect. So making sure कि मेरी सारी चीज़ें to the best of my abilities, they were top notch. And added with that a little bit of luck, which is that it's just how an admission officer views my profile. This thing is very subjective. कुछ लोगों को कुछ बातें पसंद होती हैं, कुछ एडमिशन ऑफिसर्स को कुछ बातें इतनी मजे की नहीं लगती. And that is a huge element. So the fact that my application got to the right admission officer is probably the reason I made it to these universities. And sorry, that is the luck aspect of it. अच्छा जी, तो जो मेरा लेटर ऑफ मोटिवेशन, मेरा लेटर ऑफ पर्पस, माय पर्सनल स्टेटमेंट, व्हाटएवर पीपल लाइक टू कॉल इट, यूएस यूनिवर्सिटीज़ के लिए उस चीज़ को कहते हैं आपका कॉमन एप्लीकेशन एसे, व्हिच इज़ योर मेन एसे बेसिकली. तो मेन एसे में जी मैंने लिखा था अबाउट समथिंग दैट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, व्हिच इज काइंडनेस. जस्ट बीइंग काइंड टू पीपल, नॉट ओनली काइंड टू पीपल बट काइंड टू योरसेल्फ एंड टू योर कम्युनिटी. तो मैंने लिखा था अबाउट the value of kindness for me in my life, and I talked about my experiences within kindness, with my community service, within my people, within my community as a whole, with my friends and family, and also with my city Lahore. There are multiple projects that I've done within my city Lahore, owing to education, environment, like sense of identity and all of that. So मैंने उसके बारे में लिखा था स्पेसिफिकली कि मुझे काइंडनेस इंपॉर्टेंट क्यों लगती है एंड दुनिया में काइंडनेस इंपॉर्टेंट क्यों है, और मैंने उस काइंडनेस को कैसे प्रैक्टिस किया है अपनी लाइफ में, अपनी सिटी के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए. तो ये था मेरा मेन आइडिया मेरे पर्सनल एसे का और मेरी पर्सनल स्टेटमेंट. पहली बात, तेरी वजह से कोट पहनना पड़ा है मुझे कि इतना मुअज़्ज़ज़ बंदा है, उसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो खुद भी सूटेड होना पड़ा है. अच्छा भाई, पहले ये बता, वो जो कंसल्टेंट, इतने पाकिस्तान में कंसल्टेंट ही कंसल्टेंट बैठे हुए हैं और बड़े एक्सपेंसिव है, वो उनको तुमने यूज़ नहीं किया था मुझे जहाँ तक पता है. तो क्या वजह है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? इसमें बहुत से ओपिनियन है और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पर्सनली मेरा जो, बिफोर आई टेल यू गाइस माय ओपिनियन, I'll tell you what I did specifically. So I had gone through one cycle already. I had gone to expensive consultancy firm and nothing had happened. So when I applied for my first year, when I applied for my admissions during my first year of application cycle, I was mostly rejected from all of the places. COVID was at an all-time high. There were issues with financial aid, and I couldn't really get to a proper university. Plus, I also got COVID, which is why मेरे O and A level के final exams delay हो गए, जिसकी वजह से मैं ग्रेजुएट नहीं कर सका टाइम पे अपने हाई स्कूल से. इसका मतलब था कि मैं उस साल यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं कर सकता था. तो मैंने एक साल गैप ईयर लिया. गैप ईयर लेने के बाद जब मैं दूसरे साल में आया तो मेरा पर्सपेक्टिव इस सारी चीज़ों पे बहुत बदल चुका था.
मुझे एक तो बहुत ज़्यादा नॉलेज थी एज टू हाउ दिस एप्लीकेशन प्रोसेस वर्क्स, बट ऑल्सो मुझे सेकेंडली ये भी पता था कि मैंने एग्जैक्टली करना क्या है और किस तरह करना है। तो मैंने स्पेसिफिकली उतनी खास हेल्प नहीं ली, मगर स्टिल मैं मेरे मेरे पोटेंशियल, मेरे लाइक ग्रेड्स की वजह से और मेरे एप्लीकेशन की क्वालिटी की वजह से एंड द फैक्ट कि आई वाजंट आस्किंग फॉर मच, आई फॉर द लास्ट 2 weeks of my application, which was around December 25th से लेके January 5th तक, for these I believe 10 to 12 days, I got help from people I know who have been working in the industry, who who helped me with my personal statement essay and helped me structure my application. So I didn't like pay a consultancy to help me with all of that. As far as like this topic goes कि आपको pay करना चाहिए नहीं करना चाहिए, this is your personal choice as to if you feel like your money is going to be worth it or not. Personally speaking, it also pushes some people at a disadvantage and pushes some people at a huge advantage as well. uh, what is the reasonable price for this? That is also very very debatable. Some people would say like 5 lakh 6 lakh rupees is okay to pay to someone to get you into college. Some people would say it's too much. Some people would say like consultancies actually help you, and some people would argue against that. I personally feel that some do, some not. As far as the price goes, I feel like if someone is helping you with this in terms that आपके एसेस को वो आपको अलाउ करे, आपकी थॉट्स को स्ट्रक्चर करे, आपके पास कोई आइडिया वो उसको someone is like helping you shape that idea, that is good. That is what everyone does. Like people ask their parents, people ask their teachers and professors whatnot. मगर अगर आपकी कोई एप्लीकेशन लिख रहा है आपके लिए, झूठ बोल रहा है और आपकी एप्लीकेशन को फॉल्सिफाई कर रहा है, वो आई व्यू इट एज समथिंग जिसमें आप दूसरों का हक मार रहे हो. माई जनरल एडवाइस वुड बी, इफ यू वांट टू गो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट टेक हेल्प. डोंट allow someone to be you, because the only person that can truly be you is you. ओ भाई ये तो बता दे कि तेरी हॉबीज क्या थी, क्या करता था, खेलता क्या था? Hobbies, like I would say these are like major parts of my life, which is कि मुझे creativity किसी भी form में बहुत पसंद है. Whether that's like theater, like I've been a theater kid for like most part of my life. I was started in 5th grade actually. But other than that, like I also love like graphics and like music as part of it, which is something that I don't delve into a lot. I play just a little bit of guitar, but I also like videography, cinematography, and photography specifically, which is why like I like the fact that I'm recording this, and I was really up for it when my uncle asked me. And other than that, I like to play sports. I do play badminton, I play football, and I've begun a new sports here, which is volleyball, which was surprising to me because like one of my friends just called me one day and I was like, let's try this game, and it was quite fun. And so I've been playing volleyball recently, a lot at college. So these are like some of my hobbies that I love doing, and yeah, that's mostly it. और भाई ये खाने शाने का क्या सूरत हाल है? चाइना में तो सुना है कोई हलाल शलाल खाना भी नहीं मिलता. खुद बनाते हो या मतलब हमारी तरह या क्या करना पड़ता है? It's kind of a surprise, which is that I don't generally cook a lot here. यहाँ पे ड्यूक कुंचान यूनिवर्सिटी में डाइनिंग हॉल्स मौजूद हैं. आपको बहुत अच्छा ज़बरदस्त हलाल खाना भी मिलेगा. आपको दूसरा प्रेफर है आप वो भी खा सकते हो. बट यहाँ पर 3 डाइनिंग हॉल्स हैं. एक हलाल डाइनिंग हॉल है और एक एग्जीक्यूटिव डाइनिंग हॉल है और एक जनरल डाइनिंग हॉल है जिसमें आपको मल्टीट्यूड ऑफ डिशेस वगैरह मिलती हैं. सो आई मोस्टली ईट फ्रॉम देयर, बट आई ऑल्सो कुक माई ब्रेकफास्ट. तो ये है कि डॉर्म्स में स्पेसिफिकली कुकिंग अप्लायंसेज अलाउड नहीं है, हमारे जो कमरे हैं हमारे हॉस्टल में. So what we do is we have like electric pots जिसके अंदर हम लोग, मैं personally like अंडे उबालता हूँ. I like have boiled eggs, I have yogurt in the fridge with me, I have milk, so I usually have breakfast with that. उसके अलावा मैंने oats रखे हुए हैं, मैंने एक blender रखा हुआ है जिसके थ्रू मैं shakes बनाता हूँ. अच्छा जी, अगला सवाल है जी कि are you missing your family? Of course, family की तो सबको याद आती है. I do miss Pakistan as well, specifically the food and the culture. I'm still enjoying myself here, and घर का अपना एस्पेक्ट है, पाकिस्तान का अपना एस्पेक्ट है, चाइना का अपना एस्पेक्ट है. So I'm enjoying both and growing through all of those experiences. I think like going home, take home message for the audience is very simple. Specifically जो audience mostly इसको सुन रही है वो लोग हैं जो कि apply कर रहे हैं college, जिन्होंने abroad पढ़ने जाना है. And I think like for them, my message is very simple. ये एक मज़े की advice है जो कि मैंने recently like सुनी है और it has changed my life in a lot of aspects. The advice is very simple, which is कि outwork everyone. इस बात का मतलब बड़ा सिंपल है. इस बात का मतलब ये है कि आपके अराउंड जो लोग हैं, और मैंने ये नोटिस किया पर्सनली और मैं खुद भी करता था जिसको मैं अब इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. मोस्ट लोग 2-3 किताबें पढ़ेंगे, 2-3 आइडियाज़ उठाएंगे, कुछ 3-4 नई बातें सीख लेंगे और फिर उसको ही इस्तेमाल करते जाएंगे शो कराने के लिए कि उनको कितना पता है, वो कितने काबिल हैं.
और आप भी वो बातें सीखोगे, मगर अगर आप उस बात को सीखने के बाद उससे ज़्यादा मुश्किल बात या कोई और मज़े का आइडिया और कंसिस्टेंटली अगर आप उसके अलावा भी सीखते जाओ, लर्न करते जाओ, बेशक आपकी फील्ड का टॉपिक है, बेशक जनरल कोई और टॉपिक है, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको बस बड़ा क्यूरियस करता है कि यार इसका मतलब क्या है, ये कैसे काम करता है, ये क्या है, if you keep learning about that, there will come a time when you will literally outlearn everyone, when you will consistently know stuff that other people don't, and that is literally the path to success, not only within academia but in any career path that you follow. So just make sure that you develop a habit that every single day when you go to sleep you have learned something new, you are a better person than you were before, you are a more learned person than you were a day before, and that is what advice will compound over time, and that will take you farther than anything has ever taken you, and that is the advice I follow, and that's perhaps one of the best advice that I've ever received. So thank you so much for this opportunity, uncle. And बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया आपका, but everyone who's applying to college, who wants to study abroad, good luck with your journey. If you have any questions, feel free to comment down there, and I will be happy to answer them, or uncle will be happy to answer them as soon as possible. आपने Thank you. फरमुदाते अब्दुल्ला सुन लिए भाई। आप लोगों को भी चाहिए कि जिस तरह अब्दुल्ला जो है ना, उसने सब कुछ खुद प्लान किया है, एक एडमिशन खुद ले लिया उसने। अगर आप भी बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो मेरा आपको टेक होम मैसेज ये है, अब्दुल्ला बनो, अब्दुल्ला बस।